Hello, Chaitanya. Good morning. Good morning, sir. Am I audible? Yes, sir. Where were you? I think 1 सर week. गाँव गई. Yes, अच्छा, sir. Yes, sir. गाँव गई थी ना तो नहीं कर पाई टाइम पे. no issue, no issue, no issue. Everything fine? Yes, sir. Yes. कल का क्लास देख लेना, उसमें मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स किचन कैबिनेट, शैडो कैबिनेट कुछ बताया है, राइट? आपने कुछ वॉच किया पिछले क्लास में? जो भी वीडियो है, जस्ट यू वॉच इट, ओके? टुडे आई विल स्टार्ट. Yes, sir. करूँगी मैं. आज मैं पार्लियामेंट शुरू करूंगा, ठीक है? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. Hello Mohit, hello Prince. Hi Mohit, how are you? कैसे हो बंधु? सब ठीक ठाक? Mohit, is your mic working today? Good morning. No? Yeah, good morning. Everything fine? Yes, sir. Okay. So are you taking class from your home, Mohit? Yes, sir. Okay. Where does it located in Odisha? Which district? Sorry? Kalahandi district. अच्छा. Great. That's great. Hi Prince, कैसे हो? बढ़िया? बढ़िया से बढ़िया. अच्छा, सब बढ़िया सब. कैसे चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक? हाँ जी सर, सब बढ़िया. अच्छा, कल के क्लास से कुछ सवाल है तो पूछे, बताएं. कल की क्लास से नहीं सर, ऑल क्लियर सर. शैडो कैबिनेट और किचन कैबिनेट में अंतर पता चल गया? शैडो कैबिनेट और किचन कैबिनेट में अंतर पता चल गया? आर्टिकल 74, 75, 77 और 78 ये देख लेना, बस इतना, और कुछ नहीं. और ये मैंने कल बता दिया था कि कितने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया में, और कितने चीफ मिनिस्टर थे, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर को पोजीशन होल्ड की. यस मोहित, गो अहेड. Do you want to say anything? Okay. Arinja is coming now. See, people are coming, but okay, we connected. Okay, do it. Hi Arinja, good morning. Good morning, sir. अच्छा, क्लास ले रहे थे आप क्या अभी तक? Yes, sir. Actually, I turned in pretty late, तो फिर आज पता No. लेट उठा मैं. No problem. Where are the others? Firoj और प्रिया, मानवी को आती नहीं, क्या नाम है इसका? Prince is there. Deepak. Should I start? Yes, Deepak is not here. I'm concerned about the regular student. जो रेगुलर है उनको छूटता है तो फिर मुझे लगता है कि उनका कुछ छूट रहा है, right? And then I wait for them a little bit. Okay, let's start basic. Let's discuss basic things about parliament. How? Okay. So, what is parliament? Parliament is a legislative organ of the government, right? What is parliament?
Parliament is a legislative organ of the government. Right. So in the parliament there are, yes, Manohar is coming. Yes, Manohar, good morning. What is parliament? Parliament is a legislative organ of the government, and it has two major, house. One is called House of Representative, and another is called House of the Council. कोई भी पार्लियामेंट में दो हाउस होता है. Let's see this house. This is House of Council. The House of Council is also known as Rajya Sabha, and it is also known as the Upper House. It is also known as the House of Elders. House of Elders. ये बड़े बुजुर्ग वृद्ध लोगों का काउंसिल है. You can see Rajya Sabha here. So Parliament has two major house. Two house basically, Council of State and House of Representative. House of Representative is known as Lok Sabha. House of Representative को क्या कहते हैं? लोक सभा भी कहते हैं, लोअर हाउस भी कहते हैं, राइट, एंड हाउस ऑफ यंगर्स भी कहते हैं. 25 साल के भी लोग इसमें पहुंच जाते हैं, तो हाउस ऑफ यंगर्स भी कहते हैं. एंड द प्रेसिडेंट इज not part of the parliament, but he is very much integral to the parliament because आप लिखेंगे, रुक जाइए मैं लिखाता हूँ. 1 minute. लिखिए पहला पार्लियामेंट लिख दीजिए, फिर लिखिए पार्लियामेंट लिख करके पहला पॉइंट लिखिए. The parliament is a legislative organ of the government. The parliament is a legislative organ of the government. Second point लिखिए. It has two houses. It has two houses, namely the House of Council and the House of Representative. The House of Representative. Hello Priya, how are you? Good morning. Just initiated the class. पहला पॉइंट मैंने लिखाया है, पार्लियामेंट लिखिए, फिर उसके बाद आप लिखिए. पहला पॉइंट है, the parliament is a legislative organ of the government. Second point, it has two houses, namely the House of Council and the House of Representative. Basic, the very basic things I have just told you. अगर next point लिखना है आप तो लिख लीजिए. The House of Council is known as, or the Council of State is known as the Rajya Sabha or Upper House. Third point लिख लीजिए. Third point, the Council of States is known as
the Rajya Sabha, or the House of Elders. ये बुड्ढों का हाउस है, the House of Elders. Hi Deepak, good morning. Just started class 3 minutes back. Happy New Year. Today is Baisakhi or tomorrow, 14th April. वैसाखी को मानते हैं ना? गुड़ी पड़वा. ओके, सो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे. अभी मैंने बेसिक पार्लियामेंट लिखवाया और उसका पहला पॉइंट है द पार्लियामेंट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. सेकंड पॉइंट लिखाया इट हैज टू हाउसेस, the House of Council and the House of Representative. Third point is the House of State, the Council of State is known as the Rajya Sabha or House of Elders. Fourth point लिख लीजिए, the House of Representative is known as the Lok Sabha or the lower house or the House of Younger. 25 साल के भी लोग, House of Younger. Who is the younger parliamentarian in the current parliament? अभी के पार्लियामेंट में सबसे यंग MPs कौन है? There are two MPs that is coming in my mind. Yes, tell me. One is lady. No, अनुराग ठाकुर. एक कर्नाटका से है, just name his तेजस्वी सूर्या. या तेजस्वी सूर्या से भी एक यंग है. She is lady from Kerala. Yes, Chandrani Murmu. Is she from Kerala? Deepak? Odisha. Okay. She's from Odisha because Murmu वहाँ नहीं होती. Murmu is Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Central India. Anyway, the House of Representatives is known as. So, have you written down the basic? Okay. Now, the most important part to know is that the president is not part of the. President is a part of the. President is the fifth point. The president is part of the parliament. He can dissolve the parliament at any point of time. At any point of time. All three session starts with his address.
भी अगर लेजिस्लेचर पास होता है तो पार्लियामेंट में एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट, you know, that bill needs signature of the president. लिख लिया, 6 पॉइंट लिखिए, 6 पॉइंट इसी में लिखिए, इसी में। when the parliament passes a bill, it needs the president's signature. President signature. Right. So the president is very much integral part of the parliament. So the president is very much integral part of the parliament. When the parliament passes a bill, it needs the president's signature to become an act. It needs the president's signature to become an act. So the president is very much integral. President is very important part of the, but he is not a member of the parliament. He is not a member of either of the house. But he is not a member of either of the house. हो जाए तो बताइएगा. If you have done, then let me know. Okay, tell me US में क्या होता है? अपना माइक ऑफ कर लो, अनम्यूट कर लो, बातचीत करते रहेंगे ना तो थोड़ा मुझे भी मौका मिलेगा आपसे जानने का भी और कुछ कमेंट करने का भी. अदरवाइज मैं एक सुर में ही पढ़ाता रहता हूँ, बातचीत नहीं हो पाती है. Yes, the president is very much integral part of the parliament, but he is not a member of the either of the house. Each president in the United States of America is integral part of the Congress. वहां पे पार्लियामेंट नहीं बोलते, वहां पे कांग्रेस बोलते. और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट, देयर आर टू हाउसेस देयर. यूएस में ऐसा नहीं है. क्या पार्शियलिटी? यूएस में प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कांग्रेस. जैसे यहाँ पार्लियामेंट है वैसे वहां पर कांग्रेस है. सर आई मीन पार्शियली मतलब ये कि जो भी लॉ अगर प्रपोज किए गए हैं कांग्रेस ने किया है यूएस में, तो वो प्रेसिडेंट को सामने प्रेजेंट होगा. अब प्रेसिडेंट के पास 10 दिन है उसको असेंट देने के लिए. अगर वो 10 दिन में असेंट देता है या नहीं देता है, हाँ, तो भी वो लॉ पास हो जाएगा. अगर वो असेंट देगा तो भी, और अगर नहीं देगा तो भी पास हो जाएगा. बट अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा तो, but if he sends the same bill for the reconsideration, then what will happen? Will it become an act? No idea. Then the Congress को और ज्यादा मेजोरिटी से भेजना पड़ेगा पास करके. कांग्रेस को और ज्यादा, मान लीजिए 2/3 करके भेजा, मान लीजिए कि 50%, मान लीजिए कि उन्होंने कांग्रेस ने भेजा है 50% अब +1 मेजोरिटी से, तो प्रेसिडेंट ने क्या किया, वापस कर दिया. अब कम से कम +1 जरूर होना चाहिए, हायर मेजोरिटी होना चाहिए, to send again that bill to become an act. Okay. So we have
अमेरिका में he is the president is not integral part. He cannot dissolve the Congress. But in India, we have opted a model that is called President in Parliament. हमने क्या अपनाया है? Westminster model of government. What is Westminster model of government? Arinjay? Yes. Yes. What is Westminster model of government? जो ब्रिटेन में करते हैं यूज Britain में. It is a parliamentary. Yes. जो parliamentary form of government. Parliamentary form of government. And parliamentary form of government में ब्रिटिश में क्या होता है कि crown, right? Crown is very much integral part of the parliament. तो वहाँ पे है the crown in parliament, the crown in parliament in UK, and we have the president in parliament. कोई confusion? Westminster model of government means parliamentary form of government. जहां पर इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है वेस्टमिनिस्टर. दैट्स व्हाई कॉल्ड वेस्टमिनिस्टर मॉडल. हम बोलते हैं गुजरात मॉडल, बिहार मॉडल, पंजाब मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल. इट्स बेस्ड ऑन प्लेस नेम वेस्टमिनिस्टर. एनी कंफ्यूजन? अरिंजय, चैतन्य, दीपक, मनोहर, मोहित, प्रिंस, प्रिया? Clear? Okay, Chaitanya, tell me what is the Westminster model of government? सर ये पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और Right. इधर सर क्राउन इज अ वेरी मच इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. Right. But is he or she member of the parliament? सर ये तो नहीं पता मुझे. Yeah, no. Member, no. Even the Indian president is not a member of the parliament, right? But he is very much integral, right? He is very much central to the parliament. Because सारे जो सेशन शुरू होता है वो उसमें पार्लियामेंट प्रेसिडेंट आकर के एड्रेस करते हैं. कोई भी बिल, राइट, स्पेशली मनी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से शुरू होता है. प्रेसिडेंट के पास होता है पावर कि वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो ही इज वेरी मच इंटीग्रल एंड वेरी मच सेंट्रल टू द पार्लियामेंट. कोई भी लॉ तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट उस पर साइन नहीं करता. ओके चैतन्य? यस सर. ओके, वेरी गुड. Anyone, can you identify, is it Lok Sabha or Rajya Sabha? सर Yeah. सर ये इलेक्टेड भी तो नहीं होते ना कौन? प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट इलेक्ट भी होते हैं पार्लियामेंट से ना. क्या नॉट इलेक्टेड मींस? वेस्टर्न मिनिस्टर्स में पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट्स होते हैं और जो कुछ मैंने ये पढ़ा था कहीं पे वो नॉट इलेक्टेड होते हैं, वो क्राउन उनको चूज करता है. क्राउन कहाँ पर? ब्रिटिश में तो क्राउन Yes, ही sir. होता है ना. ब्रिटिश में प्रेसिडेंट कहाँ होता है? हाँ मतलब वही मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, ये इलेक्टेड नहीं होते ना. ऑफ कोर्स नॉट. हाँ जी. चलिए, तो मैंने अब सिंपल आपको डिफिनेशन दिया था. प्रेसिडेंट इज अ लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. लेट्स हैव डिस्कस ऑन सम broad perspective. What is a parliament? So what is a parliament? You know, there are three kind of definitions that come up. One is it is an institution of representation.
How it is so? Because the structure of the parliament based on three notions of representation. It represents the people's will. This is Lok Sabha. And it also represents the federal original interests. Rajya Sabha. It represents different interests of the different classes, caste, community within the Lok Sabha और इवन राज्य सभा, क्योंकि हर कम्युनिटी के लोग आते हैं और अलग अलग क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट इज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन. लिख लीजिए, पार्लियामेंट इज अ पहला इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन. The structure of parliament is based on three notions of representation. First, it represents the people's will. Indirectly, Lok Sabha के बारे में कह रहा हूँ, you know. दूसरा, it represents federation or regional interests, Rajya Sabha. And third, it represents the interests of different classes, communities. That is the first definition. It is an institution of representation. कोई पूछे कि पार्लियामेंट क्या है? It is an institution of representation. Of course, it is a legislative organ. जो पहला definition था, उसमें थोड़ा सा मैं ब्राउड कर रहा हूँ उसको, क्योंकि पार्लियामेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन. पार्लियामेंट, जुडिशरी, हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे पार्लियामेंट को. तो दैट आपका थोड़ा सा यहाँ पे आप क्वेश्चन आएंगे तो आप एनालिटिकली यू कैन आंसर. लोकसभा राज्यसभा के क्वेश्चन. Done? Clear? The parliament is a institution of representation. It represents, you know, three notion basically: the people's will, regional interest, and the interest of the different classes. Priya, Prince, Manohar, Deepak, Chaitanya, Arinjay. Sab clear hai na? Okay. The second one is a parliament is a body of deliberation. What do you mean by deliberation, Priya? It is like make planning, like so that it is for the welfare of the society. If you are going to make any kind of bill, so Debate, discussion, right? Deliberation means debate, discussion, right? जैसे हम लोग किसी भी बात पे डिस्कशन करने लग जाते हैं कि अच्छे ओके कि मान लीजिए एक सवाल देता हूं मैं कि इज एजुकेशन शुड बी अ क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन इन द पंचायती राज. दिस इज अ क्वेश्चन, राइट? दिस इज अ पॉइंट वेयर वी कैन डिबेट, वी कैन डिस्कस. So in similar manner, the parliament is a central institution in India which debate the most important any important issues. For example, about China, even कोई भी issue parliament deliberate करता है. About the farmers issue, about the poor, about pollutions, about any law regarding any issues, about women reservations. Am I making sense? Please. Mohit, Manohar, Deepak, Chaitanya, Arinjay, am I making sense? It is a central body of deliberation. It discusses any collective, any issues, any important issues. It may be international issues, it may be issues
डोमेस्टिक इशूज। तो डोमेस्टिक इशूज में कुछ भी हो सकता है, फार्म्स लॉ हो सकता है, वुमेन रिजर्वेशन बिल हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, फॉरेन इशू में कुछ भी हो सकता है, राइट, कि म्यांमार में क्या चल रहा है, ये भी डिबेट कर सकते हैं पार्लियामेंट। यस दीपक, ओपन कर लो, जस्ट डिस्कशन करो, बोलो कि कुछ नोशन है, यू नो, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाते रहता हूँ तो सब कुछ मेरे दिमाग में आता है, नहीं, बहुत कुछ मैं मिस करता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा सा पुश करेंगे तो देन आई विल एक्सपेंड माय वर्जन। या जस्ट वन क्वेश्चन कि जुडिशियरी को लेके यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता ना, यानी कि चीफ जस्टिस को लेके कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता इन द पार्लियामेंट? क्यों सर देयर वाज दिस शायद राज्यसभा में था, सॉरी लोकसभा में या राज्यसभा में था सर, where Mahua Moitra was speaking through analogy about the Chief Justice of India Ranjan Gogoi, how he was accused of this sexual harassment, then he himself presided over the case. So many of the ministers and members raised objection that she is not supposed to discuss about the Chief Justice in the Parliament. क्या है कि देखिए, it's not that she cannot discuss, but कोई कमिटी बनी थी उसके सेक्सुअल हरासमेंट पे, तरुण गोगोई के सेक्सुअल हरासमेंट जो एक्यूजेशन लगा था उनके ऊपर कोई कमीशन बना था, and that commission acquitted him, right? But it is not that the parliament cannot debate on the chief justice of India or judicial appointment or anything. Parliament can debate anything, no, sexual relationship, patriarchy, कुछ भी debate कर सकते हैं. It is a supreme institution in matter of deliberation. Okay, Deepak. So I hope this parliament is a body of deliberation is clear. You know, if you see the worldwide, the parliament basically as a deliberative function is decreasing. If you see Indian parliament, it declined in terms of deliberation, right? Representation भी है, accountability भी fix करती है, ठीक है, but deliberation बहुत ही decrease हुआ है. If you see 9/11 के बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अटैक किया था, कहां पे अटैक किया था? 2003 में, अगर आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो, अफगानिस्तान पे, सॉरी 2001 के बाद, जस्ट 2001 में 9/11 हुआ ना. आई हैव रिटन रॉन्ग एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई गॉट, यस wrong, yes, you were right. 2003 में इराक पे हुआ था. 9/11 के बाद जस्ट अफगानिस्तान पे अटैक हुआ था, एंड वो एग्जीक्यूटिव एक्शन था, कहीं भी कांग्रेस को नहीं बता, मतलब कांग्रेस में डेलिब्रेशन नहीं हुआ, राइट? इफ यू सी इंडियन पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव इज बिकमिंग डे बाय डे मोर इम्पोर्टेंट एंड मोर पावरफुल, taking unilateral decisions sometimes, right? So we will see how parliament has declined in terms of deliberation. अलग से अभी हम पार्लियामेंट का डेफिनेशन पहले खत्म कर लेते हैं. So parliament is an institution of deliberation. या सर्जिकल स्ट्राइक कोई भी होता है, बहुत इंडियन पार्लियामेंट को, it is an institution of accountability. How a parliament is an institution of accountability? Anyone? I'm just starting from up. Arinjay, what are the mechanisms through which parliament ensures accountability? I mean accountability of the government. Yeah, accountability of the government. Yeah.
As in a specific article, sir, I'm not sure, sir. I'm just no article. It's the concept. You know, I'm not teaching you article now. I'm teaching you a little bit political science. So Yeah, go ahead. it is an institution of accountability, as the members that are appointed by the people, they are accountable to that people. Like if we talk about the MPs in the case of Rajya Sabha, they are appointed by the people directly. So they are accountable to that people that are appointed them and send them to the Rajya Sabha or the council. Parliament, na? Yes, or the parliament. That's it. There are mechanisms, Priya. There are mechanisms. जब हमने सबने MP को भेजा है, yes, है. जब हमने MP को भेजा है पार्लियामेंट में, तो उनका काम है कि वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं. कैसे करते हैं? मैं बताता हूं. पार्लियामेंट्री कमेटी. एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है. There are many parliamentary committee, you know, which ensures, you know, budgetary. बजट किस तरह से खर्च हो रहा है, बजट पे कितना बचा है. So there are different parliamentary committee, right? Yes, public account committee. There are many committees. That in parliamentary committee will come later. जब मैं आपको पढ़ाऊंगा. There are two kinds of committee. The standing committee and ad hoc committee. जैसे executive committee में है, उसी में जैसे public account committee है. There are different committee. It's not only public account committee. Public account committee account के मामले में पार्लियामेंट को चेक रखती है. चेक, राइट, गवर्नमेंट पे चेक रखती है. चेक मतलब उसको देखती है कि सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है. दूसरा है नो कॉन्फिडेंस मोशन. दूसरा मेजर है नो कॉन्फिडेंस मोशन. अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, अगर उसके पास मेजॉरिटी की कमी है, तो क्या करती है अपोजिशन? क्या करता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस करता है और सरकार गिर जाती है. क्योंकि अगर सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. मेजॉरिटी इज नेसेसरी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. Am I making sense? Yeah. In case of no confidence motion, it is only possible when there is a coalition government or there is a no strong government, means a government not formed by majority, because No. they can also issue whip here, sir. So Yeah. yes, sir. Yeah. So Yeah. So देखो अभी विप तो अभी शुरू हुआ है कि विप को मानना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है. आप देखेंगे कि अगर इवन you can break the party, तब तो विप नहीं चलेगा. प्रिया, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने पूरे बीजेपी को दो भागों में बांट लिया और एक भाग को मैंने अपने पक्ष में ले लिया. Will whip work in that time? so how someone can divide the party, sir? They will remain the member of that government. I cannot split the party. Can I? Can you repeat, sir? You have one party, right? You are a head of the one party. Can you split BJP or cannot? You can. So why should I, if I so okay, there is a no अगर मान लीजिए confidence- आपके पास आज कांग्रेस का एक इंटरेस्ट है कि बीजेपी को ब्रेक कर दे, और कांग्रेस चाहती है कि आधी जो मेंबर है वो मेरे पक्ष में आ जाए, वो उसका मेंबरशिप खत्म हो जाएगा. बट जब अब क्या करेगी बीजेपी, कांग्रेस क्या करेगी? नो कॉन्फिडेंस मोशन ला देगी. So then anti-defection law comes to play, like अगर एंटी डिफेक्शन लॉ में जो भी मान लीजिए कि जो बाहर हो गया है, जो चला गया है, वो मेंबरशिप खो देगा, मेंबरशिप. आर यू गेटिंग द पॉइंट? बट it's a long term process, कोई like यस, इट्स लॉन्ग टर्म. मान लीजिए कितना संख्या है, अभी कितना है? 380 है. हम अभी आपको डिवीजन करके दिखा दें. कितना हुआ? 2 से भागा दो, 190, राइट? 190 को इन्होंने अपने
पार्ट में मिला लिया। बच्चा कितना है? 190। कांग्रेस के पास कितना है? एनीवन? अच्छा, अपोजिशन मतलब 380 को अपोजिशन कितना हो गया? अपोजिशन कांग्रेस तो 44-45 है। अब नाउ ये बचा कितना? 190। नाउ दे विल अपोजिशन विल इंट्रोड्यूस नो कॉन्फिडेंस मोशन। प्रिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ऐसा हुआ है मेनी टाइम्स। How this Kamalnath government in Madhya Pradesh lost his chief ministership. Priya? Yes. आज सिंधिया आधा लेके भाग गया, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन ले लिया, उसके बाद पूरी सरकार गिर गई। So it is possible when there is a full majority also. So हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ओके, तो पार्लियामेंट्री कमिटी नो कॉन्फिडेंस मोशन और एक सो लेट्स यहाँ पर दो मैकेनिज्म आपके पास है अभी। वन मैकेनिज्म जस्ट आई एम मिसिंग फ्रॉम माय माइंड, विल टेल यू लेटर जब दिमाग में आ जाएगा। बट देयर आर टू मैकेनिज्म्स अभी आपके लिए, कि देयर आर टू मैकेनिज्म्स थ्रू व्हिच, या बोलो। The questioner, is that one of the mechanisms? जहाँ पे these are the mechanisms. Yes, parliamentary committee है, तो this is the parliamentary committee is a mechanism, right? Through which the different parliamentary committee, like the count committee, right? Like there are different committee which keeps check on the government. Parliamentary committee में हमारे पास राज्यसभा के भी मेंबर होते हैं, लोकसभा के भी मेंबर होते हैं, except one committee, और उसमें अपोजिशन के भी मेंबर होते हैं, सभी पार्टी के मेंबर होते हैं। यू नो, पीआर वहां पे प्रोपोर्शनल सिस्टम अपनाया जाता है, सभी पार्टी के लोग उसमें होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में, एंड दे कीप चेक ऑन द गवर्नमेंट। ओके अरिंजय? नहीं सर, I was saying कि is questionnaire also part of the mechanisms? Yes, question hour. Yes sir. It is a mechanism. Yes, we can say question hour. किसी ने, प्रिया ने शायद पहले कहा था, there are question hours. Mohit sir. Yes, you know, वहाँ पे भी government is held accountable. They are question on their policies. They put questions on the government, right? So question hour भी हो सकता है, but एक और है जो I'm just missing from my mind. Will tell you today in the later part, but अगर नहीं आएगा तो कल। फाइन, जो concrete जैसे कि no confidence motion है, and question hour is also one of the mechanism to which the parliament keep checks on the government. Fine. Any confusion? आप इन तीनों पॉइंट को लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में। आप लोगों ने लिख लिया तो बताइए मुझे। पार्लियामेंट, या can we say censor motion in it? we'll see. अभी मैं बता दूंगा। There are different mechanisms, but accountability के लिए अलग मेरे पास दिमाग में था, वो नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी दो रखें, उसके बाद मैं बता दूंगा। जो मेरे दिमाग में था वो नहीं। चलिए, so have you done writing part? अभी हम डिस्कस कर रहे थे, या मैं लिखा दूं? फिर से लिखा दूं? To the dictate the parliament is an institution of representation. ये पीपीटी आपके पास जाएगा, and it is a body of deliberation and it is an institution of accountability. Done.
प्रिंस ने, दीपक ने बोला हो गया, मोहित, मनोहर, चैतन्य, अरिंजय। चैतन्य लिखा आपने? ओके, अरिंजय, प्रिया, क्लियर, डन? Okay. Now come to the origin of Rajya Sabha. Now we will talk about Rajya Sabha, Lok Sabha, then we will compare Rajya Sabha, Lok Sabha. Right. Now come to the origin of Rajya Sabha. So when origin, actually Rajya Sabha तो उस वक्त नाम नहीं था, उस वक्त नाम था Council of the State. So we can chase, the origin of second chamber, that is chamber Council of the State, from Government of India Act 1990. जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था, उन्होंने कहा था कि इसको इंस्टीट्यूट करने के लिए, इनको एस्टैब्लिश करने के लिए, एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोवाइडेड the Council of State as a second chamber of the legislature, right? And it came into existence in 1921. Right? The Governor General was the ex officio president of the Council of the State. This was the origin. Note it down. लिखिए, Council of State, Rajya Sabha. पहला पॉइंट, the origin of the second chamber can be traced to Montesquieu Chelmsford report, right? The Government of India Act GOI, the Government of India Act 1919 provided the second chamber. इतना जानना बहुत है, right? अब आइए, एक ही पॉइंट था, ओके. Now come to the constitutional provisions relating to Rajya Sabha. So Rajya Sabha का strength कितना है? You all know? Do you know what is the strength of Rajya Sabha? Rajya Sabha का strength कितना है? Constitution ने provide किया है 250, right? But 250 में 12 जो 12 member है, that should be nominated by the President of India, right? So 238 will be the representative of the states and union territories, and 12 will be nominated. लिखिए, इसी सेकेंड पॉइंट में लिखिए, इसी में उसी का आर्टिकल 80 provided that the maximum number or maximum strength of Rajya Sabha will be 250. Of Rajya Sabha will be 250.
out of 250 members, 238 are elected indirectly from the state and UT, and 12 are nominated by the president. Article 80 provided that the maximum strength of Rajya Sabha would be 250. Out of 250, 238 are elected from Rajya Sabha, elected from indirectly from the state and UTs, and 12 are nominated by the president. Third point लिखिए इसमें, the president nominates members of Rajya Sabha to those who have special knowledge or practical knowledge in art, culture, social services. It is. तो जैतु बताइएगा. The president nominates members of Rajya Sabha to those who have special knowledge or practical knowledge in art, culture, social services. Now tell me कि practical जो practicality है इसका president का, president अपने मन से nominate करता है या government का influence होता है? Is president free to nominate the member of Rajya Sabha by his will or no? Anyone? It's totally based on government. Totally government. Yeah, so many people. एक भी नहीं होता है विदाउट ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का. सो राइट, चौथा ये एक पॉइंट और भी लिख लीजिए. मान लीजिए अब एक पॉइंट और लिख लीजिए. पॉइंट ये है आपका कि मान लीजिए 245 होता है. एट प्रेजेंट देयर आर, देखिए एट प्रेजेंट there are 245 members, right, in the Rajya Sabha. Out of 245 कितना है? 229 states से represent, 299. Yes, 229
from states, from different states, plus 4 from UTs, and 12 nominated. So there are total 245. Up, note it down. Then Arinjay, Deepak, Mohit, Prince, Priya. Done. Priya done. Sorry. Point only. The fourth schedule explains allocation of seats. Fourth schedule explains allocation of seats of states and UTs in the Rajya Sabha. Right? So, next point, say, there is no uniformity. There are no uniformity in terms of state representation in the Rajya Sabha. For example, UP has 31 members in the Rajya Sabha. Members in the Rajya Sabha, but Tripura has only 1. Only 1. There are no uniformity in terms of state representations in the Rajya Sabha. For example, UP means Uttar Pradesh. UP has 31 members in the Rajya Sabha, but Tripura has only 1 member. But US में कैसे है? What about United States of America? Anyone? Priya? Do you know? Yeah. So I think equal representation is there Equal. because the true federalism is there. No? Exactly. Any federalism is not true federalism, right? America has its own model of federalism. Yes, each state has equal representation. So वहां पर कितने स्टेट हैं टोटल आप लोग को पता है? 50, राइट? और सबको कितना है? into 2 यानी 100, राइट? सो सीनेट में 100 मेंबर है. ओके, अगर हम यूटी के मामले में बात करें तो दिल्ली के कितने मेंबर हैं? 2 यूटी है हमारे पास जिसके पास स्टेट असेंबली है, और मात्र 2 स्टेट यूटी ऐसा है जिसका रिप्रेजेंटेशन है
कहाँ पर? राज्यसभा में। दिल्ली का कितना है? यस। और उसके बाद त्रिपुरा नहीं, पुडुचेरी का 1, राइट। सो मैंने कहीं लिखा था ना 12, 4 जो यूटी है, 4 सीट्स फ्रॉम यूटी, 1 है पुडुचेरी से और 3 है दिल्ली से। इतना लिखो पहले, इतना अगर आपने लिख लिया तो मुझे बताएं, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। अगर प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट कर दिया, मान लो एमपी, राज्यसभा में कितना मजा है ना, बहुत पैसे में, मतलब बहुत कुछ मिलते हैं। 5 करोड़ तो वैसे एमपी लैड मिलता है, यू नो, एमपी लैड, दैट्स कॉल्ड पॉकेट मनी फॉर एमपी। 5 करोड़, यस, लोकल एरिया डेवलपमेंट, दैट्स लैड। Which government have introduced this? Any idea? Any idea about कौन सी गवर्नमेंट ने एमपी लैड को इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में? ठीक है, नो आइडिया, मेक अ वाइल्ड गेस। पहले 90s के आसपास का है। अब मैं एक क्लू बता दिया आपको। यस 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 दीपक, राइट, इट वाज नरसिम्हा राव who introduced this policy. So क्या ये 5 करोड़ रुपए हमको मिलना चाहिए लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए किसी एमपी को? Just I'm asking logic behind the local area development. So what is the significance of local government? For example, we have local government, right? Panchayati Raj in the rural area and urban government, municipality in the urban area, right? So if an MP is responsible to develop this local area, then what is the importance of local government and even MLA? Just question I came in my mind and I just put up to you. Unmute yourself, anyone, मतलब सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। जितने जोर से डिस्कशन करेंगे, जितने अच्छे से आप लोग डिस्कशन करेंगे, उतने अच्छे से मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा। Depends on, of course. हाँ, बोलिए। So just a wild guess, sir, but ये local area में जो भी needs या लोगों की needs है, like infrastructural या फिर resources, drainage, road, agriculture, yes. So that is communicated to the MP, and then on that basis the 5 crore that has been allocated, probably that is then distributed for this infrastructure or developmental work, which is then seen by this local administration. DM, yes, you people will, the potential, the future DM, yes. Yeah, you will be able, you will be responsible to see the whether the work has been done or not, and you will be also the fund releaser, right? Local development area, local area development. My question is why, what's the need of local area development? What's the use of this scheme when we have, see, we are electing MP, हम MP को क्यों elect करते हैं? क्योंकि हम पार्लियामेंट में वो जा सके और जो भी नेशनल इशू हो, राइट, उसके बारे में डेलिब्रेट करें, राइट, उसके बारे में जो भी एग्जीक्यूटिव है उसको चेक करें। और पहला मैंने क्या लिखाया था, व्हाट इज पार्लियामेंट, हमें हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करें, बट डेवलपमेंट करना क्या एमपी का काम है? ये दैट इज माय क्वेश्चन। When we do have, a local government,
That's my question. Deepak. सर मान लीजिए ब्रिज बनाना, रोड बनाना, ठीक है, एग्रीकल्चर को ठीक करना, हाँ ब्रिज, छोटा सा ब्रिज बनाना, छोटा छोटा काम करते हैं लोग, छोटा छोटा काम करते हैं। ये काम क्या एमपी का है या एमएलए का है या लोकल गवर्नमेंट का है? लॉजिकल। Now come to the anyone, just unmute yourself and then let me know. I had a huge debate with Sasur Tharoor on this issue on one occasion. Why does he need an MP lab? Let me know. Let me tell you. Yes, Deepak. Yeah, again sir, a wild guess. Sir, काम ऐसे तो local government का है, sir, but the what they need or what they want उसका representation करने के लिए to the main government body जहाँ पे ये सब deliberation होता है, वहाँ पे सर representation करने के लिए कोई चाहिए, which is done by this MP or MLAs. MLA state level पे करेगा और MP आपका national level पे the representation. Right. But administration जो है वो local government देखेगी. Right. Local area development भी तो local, you know 243G. What this article says about? It says about, you know, the local government will establish social justice and will plan a program of development. This local government will establish social justice and plan a program for local development, right? So when local development is assigned to the local government, अगर आप प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बताता हूँ कि क्या होता है जब एमपी आपके एरिया में आते हैं या एमएलए आपके एरिया में आते हैं तो आप लोग उनको पकड़ते हैं, राइट? हम लोग पकड़ते हैं कि अच्छा देखो सर ये नाला नहीं है, ये गली, इस गली में ये नहीं है, उस गली में वो नहीं है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये प्रॉब्लम है। अब ये एमपी और एमएलए को लगता है कि यार लोग तो मुझे बोल रहे हैं, और दैट वाज अ प्रैक्टिकलिटी फ्रॉम 1990, बहुत पहले से। बट 1990 में उनको लगा कि चलो एमपी को भी कुछ फंड मिल जाए ताकि दैट फंड इज कॉल्ड पॉकेट मनी फॉर एमपी और एमएलए। उस एरिया का जो भी स्पेसिफिक इशू है उसको वो सॉल्व कर सके। बट इफ यू सी फ्रॉम द लॉजिक ऑफ द लोकल गवर्नमेंट देन यू विल फाइंड दैट एमपी लैड और एमएलए लैड इज नॉट सिग्निफिकेंट, राइट? एमएलए और एमपी क्या करता है, अपने घर के आसपास का जो एरिया है उसको क्लीन कर लेता है, और दूसरा जो एरिया है, जैसे प्रिंस एक दिन बता रहे थे कि सर मेरे घर के बगल वाला जो एरिया है उसमें रोड बरसों से नहीं बना है, क्या प्रिंस? So, Yeah. is it true that this amount is not directly given to the MP but to the district authority of the? Exactly, that's right. It goes through the there. And it is only for MP or for MLAs also? एमएलए के लिए भी होता है, एमएलए के लिए होता है, एमएलए के लिए होता है, एमएलए लैड। So उसको बोलते हैं एमएलए लैड, उसको बोलते हैं एमपी लैड। एनीवे वी विल डिस्कस इट लेटर, हम लोग बात करेंगे। बट एनीवे अभी दिमाग में आ गया था तो थोड़ा सा, एनीवे सो
चलिए हम आगे देखते हैं। इतना क्लियर है जितना हम लोगों ने बातचीत किया है? So, Yes. in this case, MLA will give that fund to the district authority or the parliament No, will for directly. MLA डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, MLA के लिए जो SDM है ना, Sorry, not MLA, MP. MP के लिए जो DM है, एक्चुअली MP एक प्रोग्राम देता है कि ये काम है, इतना एलोकेशन है, प्रोग्राम, और फिर जो DM है वो कॉन्ट्रैक्ट एलोकेट करता है, राइट। और फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर बिल देता है, फिर DM क्या करता है, रीइंबर्स कर देता है बिल। No, sir, the government will directly give that fund to the district authority or through District. MP. No, this directly. Then why it is called as MP-led? And because MP has the sole authority to expand on it, मतलब to expand it, दूसरा नहीं कर सकता। सर अब ये बात चली रही है तो फिर मेरी एक कंफ्यूजन है, वो भी दूर कर। हाँ बिल्कुल। हमारे यहाँ पे नेशनल हाईवे पे एक फ्लाईओवर बना है, तो हमारे यहाँ के मतलब MP है कृष्णपाल गुर्जर, तो वो मतलब है कि वो उन्होंने बनवाया है MP लैब से। मेरे को एक ये कंफ्यूजन है कि नेशनल हाईवे पे फ्लाईओवर वो अपने फंड से कैसे बनवा सकते हैं? यार उनके एरिया में वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनका जो एरिया है ना उसमें अगर इशू आ रहा है, पूरे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है MLA के लिए भी और MP के लिए भी। सर अभी आपने कहा कि 5 करोड़ मिलते हैं, हाँ, उस फ्लाईओवर की कॉस्ट ही 7 करोड़ है यार, तो 5 हर 2 साल का बना 2 करोड़ उन्होंने अपनी जेब से लगाए। पता नहीं, आई डोंट हैव कोई आइडिया नहीं कहाँ से उन्होंने लगाया है, कहाँ से मैनेज किया है। और सर ये बात भी सही है कि वो अपने आसपास का एरिया, हमारे यहाँ के जो MLA हैं वो बीजेपी के हैं, तो उनके वहाँ के एरिया को देख के ऐसा लगता है जैसे कि हम चंडीगढ़ में हैं, बाकी के एरिया को देख के ऐसा लगता है जैसे कि नहीं, ये रियलिटी में पल बनी है। हाँ, एक्चुअली यही आर्गुमेंट शशि थरूर ने हमें दिया था कि देखिए ऐसा नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट के पास काम है, हमारे पास भी लोग आते हैं और अलग अलग काम किया, और रियली आते हैं। मैंने एक MLA के साथ करीब 6 महीने के साथ काम किया था, राइट, फॉर द रिसर्च पर्पस। आई वाज नॉट विद द पॉलिटिकल पर्पस, कोई पॉलिटिकल पर्पस नहीं था। बहुत लोग आते हैं MLA के पास, बहुत लोग आते हैं, और MLA के पास पर्टिकुलरली सिस्टम होता है, ठीक है। वो 5 लोग इसलिए रखते हैं कि चलो तुम 5 लोग रखते हैं आधार बनवाने के लिए, पेंशन स्कीम दिलवाने के लिए, आपके पास अगर कुछ राशन नहीं आ रहा है उसको दिलवाने के लिए, 4-5 लोग अलग से रखते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो करते हैं। For this, so मतलब इन सब चीजों के लिए तो आई थिंक सो वो पार्षद होते हैं ना, जो लोकल बॉडी वाले होते हैं, लोकल वहां पर भी जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, लेकिन लोगों को ये आइडिया है कि MLA के पास ज्यादा पावर है, वो ज्यादा काम करवा सकते हैं। MLA कुछ नहीं करता, राइट। लोकल काम भी, छोटा काम भी लोग MP के पास लेके चले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कि उनके पास बहुत पावर है, राइट, तो उनके पास भी सवाल जाते हैं, और इसी बेसिस पे एक्चुअली फंड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। एनीवे सर आगे मेरे को यार ये 2020 में भी क्वेश्चन आया MP लैंड से रिलेटेड। हाँ, राइट, तो मैंने सॉल्व किया था 33 या 35 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है ये 2022 में, मतलब नेक्स्ट ईयर 2020 में 2020 में सर कंफ्यूज, हाँ 2020 में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था MP लैंड से रिलेटेड। आया, अब मेरे को उसमें आया, आंसर मुझे भी याद है, आया। याद है, हाँ मेंस में एग्जाम आया है ना सर, प्रीलिम्स में भी। हाँ प्रीलिम्स में सर। नाउ आप राज्यसभा का ड्यूरेशन कितना होता है? ड्यूरेशन राज्यसभा का बताएं कि प्रिंस, मोहित, दीपक, चैतन्य, अरिंजय। हाँ
सर वैसे तो ये 5 साल का है, बट ये तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है ना। Yes, yes. एक पर्टिकुलर एमपी के लिए 5 साल, बाकी तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। It is a permanent body. परमानेंट होती है सर। Permanent body. It is a continuing chamber. So लिखिए ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा में पहला पॉइंट लिखिए, इट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1952, पहली बार कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1952 में, एंड इट इज ए कंटिन्यूइंग चैम्बर, दैट इज इट इज ए परमानेंट बॉडी नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ये कभी खत्म नहीं होता है। लिखिए, जब तक मैं खुद ना लिखूं तो मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। लिखिए राज्यसभा ड्यूरेशन पहला लिखिए, it was constituted in 1952. It is a continuing body. Permanent chamber. Permanent chamber of the parliament, not subject to dissolution. ये कभी डिसॉल्व नहीं होता है। जबकि पार्लियामेंट डिसॉल्व होता है, राइट? सॉरी पार्लियामेंट, सॉरी लोकसभा डिसॉल्व होता है। ओके, इसके मेंबर कितने साल के लिए चुने जाते हैं? Is there a constitutional provision for the term of but is it constitutionally mandated? Is Indian Constitution gives mandate or not? भारतीय संविधान में है? No, it is not. लिखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा नहीं है कि उनका नाम क्या होगा, दैट मीन्स टर्म क्या होगा। लिखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन does not fix the term of office of the member of Rajya Sabha, of the members of the Rajya Sabha. मोहित आ रहा है, जा रहा है, certain issue with internet. Okay, the Constitution does not fix the forms, the term of office of the members of the Rajya Sabha. Right? The RPA Act, the PRA Act or RPA Act, the RPA Act, Representation of the People's Act. Representation of the People Act 1951, 1951 provides 6-year terms to the members of the Rajya Sabha. तो अगर ऑब्जेक्टिव में आए कि ऐसा लिखा हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6-year टर्म्स फॉर द राज्यसभा, वो गलत होगा। ओके, चैतन्य, अरिंजय, दीप, ओके, मनोहर, मोहित, प्रिंस, यस, कीप इट इन माइंड।
बहुत क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। डन? Anyone? Everyone? Okay. Mohit, मनोहर, दीपक, चैतन्य, अरिंजय, सब लोगों ने कर लिया? वेरी गुड। सर या सर वो मैं कल भूल गया था, थोड़ा सा टाइम है आगे, फ्यू क्वेश्चन। हाँ आप मुझे मेल कर देंगे? मेल कर दो सर। मैं हाँ मेल कर दीजिए, मैं उसका आंसर बता देता हूँ। आंसर करना है या डिस्कशन करना है? डिस्कशन करना था उस पे। अच्छा। उसका ना आंसर ना मैंने जब मैं सॉल्व कर रहा था ना, तो उसके आंसर ना 2 आंसर दे रखे हैं, तभी मेरे को डिस्कशन करना था कि कौन सा आंसर ठीक होगा। ठीक होगा। तो सर मैं कमेंट्स में लिखूं सर? मुझे 1 मिनट दे दीजिए, आप कमेंट में डाल दीजिए। बस एक पॉइंट और लिख लीजिए, ठीक है? एक पॉइंट और लिख लीजिए और देखता लिख लीजिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए। थर्ड या फोर्थ पॉइंट होगा, लिख लीजिए। 1/3 members of the RS means Rajya Sabha, retired everywhere, retired every year. वन थर्ड जो मेंबर है वो हर साल रिटायर होता है। ओके, पहली बार रिटायरमेंट कब हुआ था और किस बेसिस पे हुआ था? एनीवन? मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम जो रिटायरमेंट हुआ था वो क्या बोलते हैं यार, वो लॉटरी बेसिस पे। यस, लॉटरी बेसिस पे हुआ था फर्स्ट टाइम जो रिटायरमेंट हुआ था राज्यसभा मेंबर का। ओके, so 1/3 members of Rajya Sabha retired every year. Done. Then let's see the question. What this question is all about. आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ें। The President of India can summon a session of Parliament at such place as he thinks fit. Any place of India, right? The Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. Yeah, that's right. There is no minimum number of days that the Parliament is required to meet in a year. Minimum तो 2 दिन है ना? Now come to the answer. देखिए थर्ड सही है, मिनिमम 2 days है, 2 दिन तो बैठना पड़ेगा। 6 मंथ में एक बार, यानी कि साल में 1-2 बार। दूसरा ऑप्शन से आपका provides for 3 sessions for the parliament, but it is not mandatory by. Yes, दूसरा भी आपका ओके, मतलब सही है, करेक्ट ऑप्शन से। पहला, the President of India can summon a session of Parliament at such place as he thinks fit. I'm not sure about the first one, and it is a wrong from my side. It is wrong, so 2 and 3 would be the correct answer. मतलब correct statement. So according to Indian Constitution, does not mention anything about the number of Parliament session in a year. Second point sir यही है. The Constitution provide of the 3 session of the Parliament. हाँ, तो सर लेकिन the Constitution according to Indian Constitution उन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, कितने सेशन होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। है 3 सेशन है, अभी बताऊंगा आपको। 3 सेशन है सर। 3 सेशन है, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड क्या बोलते हैं उसको, थर्ड सेशन। 3 सेशन है सर। मैं जिस बुक से मैंने किया ना क्वेश्चन, ये भी 2020 का है, विंटर सेशन। यस, सो बजट सेशन पहला सेशन है, बजट सेशन। मैं बताऊंगा, सारा बताऊंगा आप लोगों को।
दूसरा है दूसरा मैं बोल रहा था क्या देखो, तीसरा है विंटर सेशन, मानसून सेशन, मॉनसून सेशन। राइट। सर ये इसमें ये बात हो रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड करवाए हैं 3 सेशन। आप ये देखिए ना, इसमें ऊपर ही लिखा हुआ था, मैं देख रहा हूँ प्रोवाइड द 3 सेशन। Constitution of India provides 3 session of the, I don't know about the anyone, Deepak, Arinjay, Manohar, Mohit, any clue? Sir, the constitution doesn't provide. Constitution doesn't provide. No, sir. It is a rule of the parliament, the statute of the parliament, right? Yeah, it's based on this historical legacy or statute. ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता है ना। So दो फिर दो सही नहीं होगा, मतलब दो गड़बड़ हो जाएगा फिर। And then sir, first one is the Article 85 of Indian Constitution empower the President to summon each House of Parliament at the such time and the place as he think fit. Is it? Yes sir, Article 85. 85? Yes sir. चलो तो फिर ये करेक्ट हो गया आपका। Yes sir. अब मेन जो ये होती है 3 तो करेक्ट है, वो तो ठीक है, वो तो हमें पता है कि 2 सेशन मतलब 2 वो होते हैं, मिनिमम नंबर होता है, 2 डेज का होता ही होता है। लेकिन अब इसमें जो आंसर दे रखा है ना, वो या तो उसमें दे रखा है ए और सी, या तो ओनली फर्स्ट करेक्ट है और ओनली मतलब फर्स्ट एंड 3 करेक्ट है, तो इसमें से ये करेक्ट है। यस, 2 आंसर दे रखे हैं सर इसमें। हाँ तो सही तो है, तो पहला और तीसरा तो हमारा यूपीएससी ने फर्स्ट करेक्ट कर रखा है सिर्फ, जो यूपीएससी ने जो चेकर ने जो की दी है ना, उसमें सिर्फ उन्होंने फर्स्ट करेक्ट कर रखा है, थर्ड करेक्ट नहीं कर रखा। जो एक एग्जाम के बाद एक आंसर की आती है ना सर। यस यस सर। हाँ जी, उसमें सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है। नहीं, तीसरा भी करेक्ट होगा, क्योंकि यस सर वही मिनिमम डेज तो है, 6 मंथ में एक बार तो पार्लियामेंट को मिलना ही मिलना है, राइट, एंड दूसरे 6 मंथ में दूसरे को मिलना है। तो इफ यू ऐड 2 देन इट विल बी 2 डेज इज द मिनिमम डे रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि 3 साल पार्लियामेंट मिले ही ना, या पूरे साल पार्लियामेंट मिले ही ना। कहीं सर फिर यूपीएससी ज्यादा मतलब कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, नंबर कम करने के लिए तो नहीं ऐसा करती कि भैया सही को भी गलत कर दो और नंबर काटो? क्योंकि मैंने ना सर, मैं ना क्वेश्चन ना भी भूल रहा हूँ, मैं आपको ना मेल करूंगा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे, राइट राइट, इसमें ना यूपीएससी कुछ बोल रही है और हमारे हिसाब से जो हमने पढ़ा कुछ और हो रहा है। हाँ जी होता है, ऐसा होता है। देखिए, जिसके पास अथॉरिटी होता है उसको ना बोलने की मतलब बोलने का ना वो होता है, जिसके पास अथॉरिटी पावर होती है ना वो बोलता है। तो यूपीएससी के पास अथॉरिटी है तो वो जो बोलेगा सही है वो सही है, जो सर वो तो ठीक है, बट यहाँ तो क्वेश्चन गलत हो रहा है ना। मैक्सिमम डेज आर प्रोवाइडेड बट नॉट मिनिमम। हाँ सर, मैक्सिमम 6 महीने तक नहीं अगर नहीं मिलती है तो 6 महीने मैक्सिमम है। 6 महीने में 1 दिन तो मिल सकता है ना, 1 दिन तो मिलना जरूरी है ना। हाँ सर, मिनिमम 2 डेज इन अ ईयर। हाँ सर, मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं है, मैक्सिमम दिया है ना। नहीं, यहाँ पे मिनिमम नंबर है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज। हाँ तो ये वाला करेक्ट है, 3 करेक्ट है। 3 करेक्ट है। हाँ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया सर, एक्चुअली मिनिमम डेज आर प्रोवाइडेड कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको मिलना पड़ेगा नेक्स्ट सीटिंग। 1 दिन मिलना पड़ेगा, 1 दिन मिनिमम, 1 दिन मतलब 1 साल में 2 दिन तो मिलना ही मिलना है ना, मिलना ही मिलना है ना दीपक, ऐसी है ना भाई? यस हाँ, तो 1 साल में 2 दिन मिलना है, तो फिर ये गलत। वो भी आर्टिकल 85 में ही दिया हुआ है। 85 में, हाँ वो भी 85 में है। राइट, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, आप बेयर एक्ट जरूर पढ़िए। बेयर एक्ट में हर आर्टिकल जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसको आर्टिकल से जरूर जोड़िए, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आज हम रखते हैं, कल सी यू टुमारो देन। yes. सबको पढ़ना पड़ेगा, वहां पे भी इंसान है और वहां पे भी इंसान ना गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं, यूपीएससी भी गलतियां करती है।
Okay, sir. Thank you, sir. Okay, most welcome.